बारिश के मौसम के शुरू होते ही वडोदरा में जलजनित बीमारियां भी बढ़ती जा रही है। खासकर बीते कुछ वक्त में वडोदरा में कॉलेरा में इजाफा देखने मिला है, जिसके मद्देनजर वडोदरा महानगर पालिका का आरोग्य विभाग हरकत में आ गया है। दरअसल पालिका के आरोग्य विभाग की ओर से पानी पूरी बनाने वाले 14 ठेले धारकों के यहां पर आज चेकिंग किया गया है। वाघोड़िया के उकाजी वारिया इलाके में पानी पूरी बनाने वालों के घर पर आज चेकिंग किया गया। पानी पूरी में इस्तेमाल होने वाले मसाले समेत की चीज़ों का चेकिंग करते हुए खराब पानी और आलू का नाश भी किया गया है। आने वाले वक्त में भी पानी पूरी बनाने वालों के यहां पर आरोग्य विभाग इसी तरीके से जांच करता रहेगा, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। खास કરીને ચોમાસાની ઋતુ હોય છે, ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન પાણીપુરીનું પાણી અને ઝાડા ઉલટી અને કોલેરા અને કમળાના કેસીસ જે વધવાના શંકાસ્પદ કેસો છે, જેના કારણે અગાઉથી જ આપણે દર વખતની જેમ આ વખતે પાણીપુરીમાં જે પાણી બનાવતા હોય છે અને બટાકાને બાફતા હોય છે, ત્યાં આગળ જે જગ્યાએ બનતું હોય છે ત્યાં આપણે ચેકિંગ કામ કરીએ છીએ। એક ઉકાજીનું વાડિયું અને બીજું સંજયનગર વારસિયા, બે ટીમ છે અને અત્યારથી પછી એકતાનગરની પાછળ બ્રહ્માનગર છે ને, ત્યાં પણ ચેકિંગ કરવામાં આવશે। મેઇન જ્યાં પાણીપુરી આ લોકો બનાવતા હોય છે, જગ્યા કેવી હોય છે અને એ લોકો શું શું વાપરતા હોય છે એની ખાસ ચકાસણી કરવામાં આવે છે। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।